Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to do our second part, means the third part of articles, that is use of the indefinite article. In the previous video I have told you that the use of the definite articles. I have told you definite one, okay? And in my first video of articles I have told you the difference between definite and indefinite. So in definite there will be the, okay, the will be considered under definite, and in indefinite a and these both of them are come under indefinite. So today we are going to do indefinite one. We have already done definite one, and I hope you understand that definite one. I have told you in very simple way, and I have told you point wise that the कब यूज होता है in a particular thing, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट से पहले. So I have already told you this very perfectly, very simple way. So let's do today indefinite word. In that we will be talking about a, okay? Main focus is on a. So indefinite में हम करने जाते हैं ये वाली वीडियो में. I will tell you 4 points, okay? Indefinite, use of indefinite articles में, okay? So let me first erase this and then we will be proceeding further. So I have written this first point, which is saying that in its original numerical sense of 1. Now in this particular point it is just simply saying that in its original numerical sense. What is numerical? The numbers like 1, 2, 3, these all come under numerical values. So in its original numerical sense of 1 means यहाँ पे बस हम एक ही चीज की बात करेंगे, and it is particularly mentioned also, that is 1. So in its original numerical sense of 1. So let's take example, that is 12 inches make a foot. We can take this example, 12 inches make a foot. And we can take one more example. First let me explain you this example. 12 inches make a foot मतलब 12 इंच एक फुट बनाएगा. अ फुट मीन्स वन फुट. 2 फुट तो नहीं बनाएंगे. फुट यू ऑल नो पैर, ओके? सो आई थिंक आई होप यू क्लियर, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस मच. इन दिस 12 इंचेस मेक अ फुट. 12 इंचेस जब एक फुट बनाएगा मतलब एक पैर बनाएगा, ओनली वन, because in this particular point also in its original numerical sense of 1, that is 1, focus on 1. numerical sense क्या होगी इसकी? 1. so 12 inches make a foot, 12 इंच एक फुट बनाता है, okay? so let's take one more example to satisfy this first sum, that is not a word was said. Not a word was said. Not a word was said. Here also one thing, one numerical value is satisfying here also, that is not a word was said means a. Here also a. And indefinite articles come under, in indefinite articles a and an come under indefinite articles. So a is coming here means एक चीज की वैल्यू की बात हो रही है, numerical sense of 1. so 1 numerical sense. so 12 inches make a foot, 12 इंच एक फुट बनाता. not a word was said, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला गया है. so means not a word was said, एक शब्द भी नहीं बोला गया है. not a word was said. so I hope you understand this first point. Let's move on to the second point, that is, let me erase this first. So the second point is saying that in the vague or vague sense of a certain. So here in the vague sense of a certain means this we don't pronounce as vague, we pronounce it as vague. Listen, first let me write this in
big letters, VAGUE. The pronunciation is vague, vague or vague. I am writing in Hindi also, vague. So the pronunciation is vague, and we don't pronounce it as vague, we pronounce it as vague. So I'm telling you side by side pronunciations also. So in the vague sense of a certain, vague means uncertain or means unexpressed. Okay. You can say vague means not clearly expressed. Not clearly expressed. और in Hindi you can say जो ढंग से स्पष्ट ना हो, वेग, वेग. सो नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड और अस्पष्ट और स्पष्ट ढंग से ना हो, एक ही मतलब है, पर्यायवाची होगा. वेग मीन्स नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड. So I hope you understand this meaning also. Now let's move on to the examples. In the vague sense of a certain, हम अ यूज करेंगे जहां पर जो चीजें हैं वो ढंग से एक्सप्रेस नहीं होंगी, नॉट क्लियरली एक्सप्रेस, ढंग से एक्सप्लेन नहीं होंगी, नॉट एग्जामिन्ड प्रॉपरली. इन दिस एग्जाम्पल्स वेयर वी गोना यूज इन द वेग सेंस ऑफ अ सर्टेन, जहाँ पे हम अ का यूज करेंगे जहाँ पे चीजें जो है वो अनसर्टेन होंगी, जो कहाँ पे भी क्लियरली एक्सप्रेस्ड नहीं होंगी. सो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स. So let's write example, that is a Kishore Kumar is suspected by the police. Here in this particular example, a Kishore Kumar is suspected by the police means a is used before Kishore. So here Kishore, and here in the vague sense of a certain, जहाँ पे clearly expressed नहीं है, clearly mentioned नहीं है, और किशोर कुमार is suspected by the police. किशोर कुमार जो है वो suspect हुआ है पुलिस द्वारा. ओके, सो suspect हुआ है बट वो पक्का क्रिमिनल नहीं है. ये अभी तक पता नहीं चला कि वो क्रिमिनल है कि नहीं, अभी बस सस्पेक्ट हुआ है दैट ही कैन बी. सो कोई स्पष्ट नहीं है, मीन्स क्लियरली मेंशन नहीं है, बस हमें ये पता है कि किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस. सो हियर इज यूज्ड बिफोर किशोर कुमार. सेकेंड सेंटेंस, वन इवनिंग अ बेगर केम टू माई डोर. वन evening a beggar come to my door. Means a is used before beggar, means beggar is not clearly mentioned whether he is a child beggar or he is a female or male, whatever beggar is that. So here it is not clearly mentioned. हमें बस ये पता है कि एक इवनिंग में एक बार शाम को एक बैगर आया था हमारे दरवाजे के आगे. सो हेयर ऑल्सो इट इज नॉट मेंशन दैट विच बैगर और द नेम ऑफ द बैगर, और इट इज नॉट क्लियरली मेंशन. बस ये पता है कि एक दिन हमारे घर के दरवाजे के आगे एक बैगर आया था. हमें मेंशन नहीं है, हमें नहीं पता. मीन्स इज यूज्ड फॉर अनसर्टेन थिंग्स. सो किशोर कुमार सस्पेक्ट बाय द पुलिस, ये क्रिमिनल है या नहीं है ये हमें नहीं पता, बस सस्पेक्ट हुआ है. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड here before किशोर. Here particular name was not given by a beggar, means here only beggar is written. So beggar, हमें ये नहीं पता कौन सा beggar. One evening a beggar, कोई beggar आया था हमारे घर के दरवाजे पर. So that's why we have used here. So I hope you understand the concept of in the vague sense of a certain. That is second point. So let's move on to the third point. So let me write that. So the third point is saying that in the sense of any, to single out an individual as the representative of a class.
Now, if you have seen my previous video where I have told you the use of the definite article, where there also I have told you that the is used for expressing the whole class. Here also a is used for expressing the whole class. Okay, means I will be taking that same example of my previous video only, that is a cow is a useful animal. A cow is a useful animal. So here this can be same example that I have told you in my previous video of use of the definite article, and here also, because यहाँ पे भी हम एक ही चीज मीन्स एक ही काउ जो है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रही है. दैट इज अ सब्जेक्ट which is representing, which is defining the whole predicate. So here also a cow is a useful animal, means cow is used. And in my previous video I have told you that अगर एक सिंगुलर हो, okay, if there will be one singular noun, there cow is mentioned as a noun. So अगर कोई सिंगुलर नाउन हो जो कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, सिमिलरली simply means that अगर एक नाउन, एक सिंगुलर नाउन मतलब एक ही, cow is one, that is singular noun. So अगर एक ही नाउन पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा, then we will be gonna use the before cow, okay. But here what's the difference? In the sense of any, किसी की भी सेंस में, to single out an individual, किसी चीज को सिंगल आउट करने के लिए हम पूरी क्लास को उसी से रिप्रेजेंट करवाते हैं, and we then use a cow is a useful animal, means we have used a instead of the, because it is a indefinite articles and the is a definite articles. So यहाँ वहां पे हमने एक सिंगुलर नाउन को पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया, यहाँ पे हमने एक चीज टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल, एक चीज को सिंगल आउट करने के लिए कि एक ही है, इसलिए हमने अ लगाया. अ का वैसे भी मतलब एक होता है, मीन्स अ बर्ड, मीन्स एक बर्ड. अ काउ मतलब हमने इस पर्टिकुलर को सिंगल करने के लिए हमने अ लगाया इन indefinite. Okay, let's take one more example so that you can understand more easily. A pupil should obey his teacher. A pupil should obey his teachers. His teacher, not teachers. His teacher, because it is, देखो यहाँ पे बताया गया a pupil should obey his teacher. Now most of you don't know the meaning of pupil. So the meaning of pupil is pupil, not people. Okay, the meaning of pupil is a child in a class, means class में जो बच्चे होते हैं, और if I can say in Hindi means छात्र. So pupil को छात्र बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो स्टूडेंट्स होते हैं. So a pupil means एक ही, a pupil, because we have used a. Here also हमने उसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने इसको a यूज कर दिया. वहां पे तो हमें बोला ही गया था कि एक सिंगुलर जो है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो एक सिंगुलर, द काउ इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास. हियर इट इज मेंशन टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को सिंगल आउट करने के लिए हमने अ लगाया. मीन्स हमें ये नहीं पता कि वेदर इट इज अ प्लूरल और सिंगुलर, पर हमें इसको सिंगुलर बनाना था इसलिए हमने अ यूज कर लिया. ओके, सो अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर. एक छात्र को या एक स्टूडेंट को अपनी टीचर की बातें फॉलो करनी चाहिए, ओबे करनी चाहिए. ओके, ही शुड follow their instructions properly. So a pupil should obey his teacher. Means here also I have told you 2 examples of this कि हमें सिंगुलर करने के लिए, हम उस चीज को सिंगल आउट करने के लिए, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, क्योंकि ये प्यूपिल ही तो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. Here also cow ही तो रिप्रेजेंट कर रही है. That's why we have used a here, and I have told you the difference that I have told you
in the use of the indefinite articles that I have told you, and in the use of the definite articles that I have already told you in my previous video, and I will post link in the description so you can check out easily what's that use of the definite article video. So let's move on to the fourth one, that is last part that you should know about the uses of the indefinite articles. So here the fourth point is saying that to make a common noun of a proper noun, हमें proper noun में से एक common noun निकालना है, and then we will be gonna use a here. Okay, means proper noun से पहले हम a use करने वाले हैं. पॉइंट को देखते ही समझ जाया करो. दैट इज टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन से हमने एक कॉमन नाउन फॉर्म करना है. मीन्स प्रॉपर नाउन से आगे जो है वो अ यूज होगा. अ इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन. यू ऑल नो व्हाट इज प्रॉपर नाउन. ओके, तो हम उसको कॉमन नाउन कर देंगे. आई विल बी टेलिंग एन एग्जाम्पल. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. Let's take one example, that is you can write a, because I will be going to use proper noun here. So a, you can write any name. Okay, let's write name Tanya. Okay, or you can, I have written name Tanya. Come to judgment. Come to judgment. Okay. Judgment means here a is used before proper noun, that is Tanya. Okay, a Tanya. Or you can write any name, whichever name you feel to like to have that. So तान्या के आगे हमने अ लगाया, प्रॉपर नाउन के आगे हमने अ लगाया. कम टू जजमेंट, वो एक जजमेंट पे आ गई, वो एक नतीजे पर उतर आई. सो हियर व्हाट्स द कॉमन नाउन? वी हैव टू फॉर्म द कॉमन नाउन. आई हैव टोल्ड यू. सो हियर तान्या कम टू जजमेंट मीन्स हम इस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं. तान्या की बात करें कि वो जो है वो जजमेंट पे उतर आई, मीन्स तान्या. सो तान्या जो है वो एक अ वाइस गर्ल, you can say a wise girl, a woman, anything. I have taken the name of a girl, so I have written a wise girl. Means Tanya come to judgment. So हमने तान्या को एक adjective बना दिया, that is wise. And girl, you all know Tanya is a girl of a name of a girl, so girl, a wise girl. So a wise girl, अगर हम लिखते तान्या की जगह अगर हम लिखते a wise girl come to judgment, then also sentence will be perfect, correct. Okay, so a wise girl come to judgment means wise girl तो कोई भी हो सकती है, means that is a common noun and we have to form that common noun. We don't have to form, I just have to tell you in the example only that in this way you will be explaining this point. Means to make a common noun of a proper noun. Proper noun से common बन सकता है. ये proper noun था तान्या. तान्या एक girl है, हमने उसके आगे adjective लगा दिया a wise girl. और you can write a intelligent girl. So a intelligent girl come to judgment. So here it is clearly mentioned or clearly satisfied that I have made a common noun from this word Tanya. Proper noun से. Okay, so in this point we just have to satisfy this only, to make a common noun of a proper noun. एक proper noun से common noun बन गया. And this is the rest of the predicate means sentence. So Tanya come to judgment. So I hope you understand this all concept of the use of the indefinite articles. So let's end up this here, and I will be teaching you omission of the article. Okay, omission मतलब cutting down means cut करना कुछ articles में से. So omission of the article I will be telling you in my next video. So
tomorrow, I guess. So I hope you understand this all concept, and if you like it, do like, share, subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.